Hello students and welcome to my channel. Today we are going to start exercise 4.3 in lecture number 2. Now students, you must be wondering कि second lecture में हमने 4.2 exercise क्यों नहीं start किया. The reason is I am just maintaining the order of difficulty of the chapter so that chapter आपको समझने में थोड़ा easy हो जाए. Okay, so if in case you want to refer exercise 4.2, you can find it in the lectures later on. Okay, so let's begin. In the exercise 4.3 we are just going to deal with the area of triangle. एक simple सा formula है, that's it. So let's start. If we have three vertices of the triangle A, B, C, whose coordinates are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, then the area of the triangle ABC. So we can find the area of triangle using the determinant. It is given by half of modulus of determinant of x1, y1, 1, x2, y2, 1 and x3, y3, 1. मीन्स जो आपको वर्टाइसिस दिए होंगे वो आपको यहाँ पे पुट करते जाना है एंड यू हैव टू राइट 1 1 1 इन द लास्ट कॉलम. ओके, दिस इज जस्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. नाउ स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी वंडरिंग कि वाई देयर आर टू वर्टिकल लाइन्स. तो ये जो बाहर वाले वर्टिकल लाइन है वो है मॉड्यूलस के लिए और ये जो अंदर वाले वर्टिकल लाइन है दिस इज फॉर द डिटर्मिनेंट. नाउ वाई वी आर टेकिंग मॉड्यूलस बिकॉज व्हेन यू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट एंड इन केस इफ यू आर गेटिंग द आंसर एज नेगेटिव तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस इट इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव. Okay, so that is only the reason we are putting two vertical lines, and it's okay if you don't put two vertical lines and if you just write half of determinant of this. In case determinant negative आ रहा है तो लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिखना होगा कि since the area cannot be negative therefore area of the triangle is this. Okay, now if you expand the determinant along column number 1, okay, column number 1 के elements कौन से है, x1, x2 and x3. So we are expanding along column number 1. सो इफ़ यू रिमेंबर कॉलम 1 में कौन से एलिमेंट के साइन चेंज होने वाले होते हैं, x2 का साइन चेंज होता है. ओके, सो लेट्स सी द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. वी आर गोइंग टू गेट हाफ इंटू, बोलो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x1. तो x1 इंटू कौन से चार एलिमेंट आएंगे, कवर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो वी गेट y2 1, y3 1. तो इफ़ यू एक्सपांड दिस व्हाट डू वी गेट, y2 माइनस y3. सो आई गेट x1 इंटू y2 माइनस y3. फिर आगे जाता है तो नेक्स्ट एलिमेंट आता है x2. इसका साइन चेंज करना होता है. सो आई एम गोइंग टू राइट माइनस x2 इंटू, दिस इज लाइंग इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो आई कवर द सेकेंड रो, आई कवर द फर्स्ट कॉलम. सो आई एम लेफ्ट विथ y1 1, y3 1. ओके, सो इमेजिन करो आप ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आने वाला है, y1 माइनस y3. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट योर y1 माइनस y3. देन यू मूव अहेड टू द थर्ड एलिमेंट विच इज x3. So it is lying in third row first column, so cover the first column and the third row. So you get determinant of this 4 element. Now if you take the determinant you get y1 minus y2. So we get y1 minus y2. Okay, if you simplify this you get half of x1 into here as it is y2 minus y3. Now imagine I am taking minus sign common from here. So this minus sign which is coming outside, it is going to become plus with this minus sign. So here you take a plus x2. So I am going to get your y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Now ये माइनस साइन बाहर लेने की जरूरत क्या है, जस्ट टू ब्रिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ यू रिमेंबर इन योर 11th स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. now स्टूडेंट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कॉलम 1 के अलॉन्ग ही एक्सपांड करना है. यू कैन एक्सपांड अलॉन्ग रो 1, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 2, एनी रो और एनी कॉलम यू कैन एक्सपांड. It is your wish. Okay, depending on the elements present you can analyze and then expand it. तो पूरे एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए. एंड जस्ट टू रिकॉल दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फॉर्मूला, आई एम जस्ट शोइंग यू दिस. पूरे एक्सरसाइज में वी विल बी यूजिंग जस्ट द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, नथिंग टू डू विथ दिस फॉर्मूला. Okay, now there are some points you need to understand. The first point, since the area is a positive quantity we always take the absolute value of the determinant. Means कि अगर हमने ये दो वर्टिकल लाइन्स की जगह पर सिर्फ एक वर्टिकल लाइन दिखा रहा है तो अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है तो वी आर गोइंग टू चूज द पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. सेकेंड पॉइंट, इफ एरिया इज गिवन वी यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन. मीन्स एरिया अगर 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4. क्यों, बिकॉज वी आर इमेजिनिंग दैट द मॉड्यूलस साइन इज रिमूव्ड एंड यू आर गेटिंग प्लस माइनस साइन ओवर हियर. ओके, and in the third point, if the 3 points are collinear then the area of triangle is 0. Obviously students, if the points are collinear means they are along the same line. Okay, so अगर वो same line के along है तो उनका area बनेगा क्या ट्राइंगल का, no. So therefore if the points are collinear then the area of triangle is 0.
क्लियर स्टूडेंट? बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, एक ही फॉर्मूला है और 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज 4.3. द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टाइसेस at the point given in each of the following. There are 3 sub questions. तो स्टार्ट कैसे करना है? 3 वर्टाइसेस दिए हुए हमको. So we have been given A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. So we start like this. Area of triangle ABC is equal to half of determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Okay, so this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3. Now students, यहाँ पे देखो मैंने 2 वर्टिकल लाइन नहीं यूज़ किया, जस्ट a symbol of determinant एंड सिंपली एक्सपांडेड. इनकेस यहाँ पे लास्ट स्टेप पे आपको नेगेटिव आंसर आता है, मतलब यहाँ पे अगर मुझे -15 आया होता है तो मैं क्या कर देता उसको +15 एंड देन आई राइट अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस. ओके, सो वी बिगिन द सम. हाफ इंटू वी हैव पुट द वैल्यूज. आई एम जस्ट एक्सपांडिंग अलॉन्ग रो नंबर 1. सो इफ यू रिमेंबर इन द रो नंबर 1 A12 का साइन चेंज होता है. ओके, बाकी दोनों एलिमेंट्स के साइन एज इट इज होता है. सो दिस इज 1 इंटू कवर द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 -3. ओके, सो यू गेट दिस टर्म. मूव हेड, यहाँ पे +0 है तो आई राइट -0. कवर द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो यू गेट 6 -4 एंड देन मूव विद द थर्ड एलिमेंट ऑफ R1 विच इज 1. कवर द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो यू गेट 18 -0 एंड देन सिंप्लीफाई, यू गेट द आंसर एज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स. स्टूडेंट लास्ट में ऐसा स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है. ओके, अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन. Likewise, we have second question and the third sub question. So I hope you can solve this on your own. Please pause the video and then verify your answer. Okay students, I hope you have got the second and the third sub question. सिर्फ एक चीज़ आपको देखना है कि थर्ड सब क्वेश्चन में देखो लास्ट में आंसर आता है -30. ओके, सो वी आर मेकिंग इट +30/2 विच बिकम्स 15 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, you have to show that the points A, B, C are collinear. Now students, आगे नोट में हम लोग ने देखा है थर्ड पॉइंट कि if the points are collinear, you can say that area of the triangle is 0. So to show that the points are collinear, you want to show that the area of triangle ABC is 0. So area of triangle ABC का फॉर्मूला लिखो. ये तुम्हारा x1 है, y1 है, तो x1 y1 1, this is your x2 y2 1, x3 y3 1. I am expanding it along column number 1. No hard and fast rule. You can expand along any row or column. Okay, so you get half into first element is A. So cover the first row and the first column. You are going to get 1 into C plus A minus 1 into A plus B. So C plus A minus A plus B. मूविंग हाइड, यहाँ पे इसका साइन चेंज होने वाला है तो ये प्लस बी है तो हम लोग क्या लिखेंगे -b. ओके, सो -b इंटू इट इज लाइंग इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो कवर द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड रो. So we are left with determinant of this 4 element, so 1 into b plus c minus a plus b into 1. Moving ahead with the third element, so c is lying in the third row first column, so cover the third row in the first column, so you get determinant of this 4 elements, so 1 into b plus c minus c plus a into 1. Okay, so now if you simplify, ये देखो जब भी bracket open होगा तो a and a gets cancelled, your b and b gets cancelled and your c and c gets cancelled, so you are left with a into c minus b minus b into, यहाँ पे बचेगा c minus a, then plus c into, you get b minus a. Okay, and if you open the bracket, you get ac minus ab minus bc plus ba plus cb minus ca. सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे and you get 0/2 which is 0 square units. Therefore the points a, b, c are collinear. Okay, coming to the third question, find the values of k if the area of triangle is 4 square units and the vertices are, मतलब क्या दिया हुआ है, area is given to us and the vertices are given to us. You want to find the value of k. So we start with the first sub question. So let a, b, c be the vertices of triangle ABC and we have been given the area which is 4 square units. So we apply the formula of area which is half of determinant of, यहाँ पे क्या देगा, k01 401 021 is equal to, जब भी एरिया दिया होता है स्टूडेंट्स, तो यू रिमेंबर द नोट, यू हैव टू राइट +-4. ओके, so when this 2 goes on the right hand side it becomes +-8. so now you are expand the determinant along row number 1. so k into कौन से 4 एलिमेंट आएंगे, तो भी 0 1 2 1, so we are going to get 0 - 2. मूव हेड, यहाँ पे +0 है तो क्या लिखेंगे -0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स, so you get 4 - 0, then move ahead, you get 1, cover the first row third column, so you get 8 - 0.
Okay, so now if you simplify, you get your minus 2k, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, and 1 into 8 is plus minus 8. So 2k is equal to, if you take this 2k over here and this over here, so you get 2k is equal to 8 plus minus 8. One time you will write 2k is equal to 8 plus 8, and the other time you write 2k is equal to 8 minus 8. So you get 2k is 16, so k is equal to 8. Likewise, 2k is 0, so k equal to 2. Okay, moving to the second sub question. We have been given the vertices and the area is also given to us. Students, please try this on your own and verify your answer. Okay, coming to the fourth question. Find the equation of the line joining these 2 points using determinants. So, हमको क्या find करना है? एक ऐसा equation of line which is passing through these 2 given points. So, let this be point A and let this be point B. And let us assume that there is a third point P x comma y which is lying on the line AB. ऐसा क्यों करते हैं? I'll just explain. Because imagine that there is a line passing through 2 given points, and let us assume that there is a third point P x comma y lying on this line. So now we can say that these 3 points are collinear. तो ये collinear है तो उनके area of triangle क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Okay, so that is the reason we are taking the help of the third point. And students, one more thing, P हमेशा x और y के फॉर्म में लेना है, क्योंकि if you remember the standard equation of a straight line, it is always in the form ax plus by plus c equal to 0. Okay, so just to get the variables x and y, we have to assume that P is x comma y. Okay, now we can go with the concept of determinant. Area of triangle APB is 0, so half into, apply the formula of determinant. यहाँ पे it doesn't matter that you choose the points P first, फिर A, फिर B. तुम ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो, doesn't make any difference. Okay, so first row में मैंने P के points लिए हुए, फिर A के points है and then B के points है. Now you can expand along row number 1. This half goes over here, becomes 0. So we take the first element of row number 1, which is x. So I cover the first column. What we get? X to 2 minus 6. Then move ahead. इसका sign change करना है तो minus y लिखेंगे. Cover the first row, second column. So we get 1 minus 3. Then the third element as it is with the sign. Cover the first row, last column. So you get 6 minus 6. Okay. On simplifying, you get x into minus 4 plus 2y plus 0 equal to 0. So if you divide throughout by 2 and make the coefficient of x as positive, you get 2x minus y equal to 0. Okay. Moving to the second sub question. वापस वही करना है, तुमको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, and we assume that there is a point P x comma y on the line AB, and since the points are collinear, we can say that area of triangle is 0. Okay, students, please try this on your own and verify your answer. Okay, very good, students. I hope you got this as your answer. Moving to the question number 5. If the area of triangle is 35 square units with the vertices, then the value of k is. This is a MCQ question. So हमको क्या दिया हुआ है? Area of triangle is given and the 3 vertices are given. So obviously we'll start with the formula of area of triangle. So we get half into 2 minus 6 1 5 4 1 k 4 1 is equal to area दिया हुआ है तो हम लोग क्या लेंगे? Plus minus 35. So if this 2 goes here, becomes plus minus 70, and then you expand along row number 1. So 2 into, we get determinant of 4 minus 4. Then इसका sign change होगा, so you write plus 6 into determinant of 5 minus k. And then the last element is 1. 1 into determinant of 20 minus 4k. So if you simplify, okay, take the k term as positive. So 10k is equal to one equation, you get 50 plus 70, or 10k is equal to 50 minus 70. So 10k is equal to, this becomes 120, or 10k is equal to minus 20. So k का value इसमें से मिलेगा 12 और k is equal to minus 2. So if you see, it's option number D, which is having 12 or minus 2 as your answer. Okay, so students, in the next lecture we'll be going to exercise 4.4. Till then, take care and goodbye.